Good evening, everyone, and a very warm welcome to all the parents and young adventurers of GGIM ANU program, and of course, ANU programs and open adventure clubs of all the schools. Uh, we're thrilled to have you all on this auspicious occasion of Gurupournima for this very interesting interactive session on Everest, a journey to the top of the world. Every mountaineering expedition is a master class on discipline, patience, teamwork, and determination. These are the values that we try to inculcate in all of our young adventurers through all the GJAM's adventure programs. Uh, GJAM का ANU प्रोग्राम जो है उससे अभी 11 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए एंड एवरी ईयर पेरेंट्स came to us with a complaint that we only interacted with kids on only one Sunday of a month. So we were always asked to increase our interactions with the kids, and that is the reason why this year onwards we will try to add more and more interactive sessions on mountaineering and related fields. So I think today is the very right time, that is the occasion of Gurupournima, and Everest is the most or the tallest peak in the world. So Everest is the best choice to start with. Varun Bhagwat, once again welcome you all for this interactive session about Everest. Uh, I will ask our Head of Operations Department, Bhushan Harshe sir, to do a preamble for today's program and introduce all the Everest team members. Thank you, Varun. Thank you very much. Am I audible? Thank you. Yes. सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा गुरुपौर्णिमेच्या. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गुरुपौर्णिमा. And जैसे वरुण ने कहा, we are thrilled to have all of you here, and we are even hoping to have more and more people to join this session, because this is a first time this kind of a session that is happening, and the occasion is of Gurupournima. Yes, and in Giripremi, for past 44 years, Giripremi ne itke expeditions keल्या, so many expeditions to mountains have been there, and Giripremi being one of the only mountaineering clubs in the world to have scaled 8 mountains which are beyond 8,000. There are a lot of stories which can be told to students. जेव्हा आम्ही ट्रेक्सला जातो, आम्हाला सगळ्या ग्रुप्स बरोबर इंटरॅक्ट करता येत नाही, कारण काही इन्स्ट्रक्टर्स आम्ही अलोकेट केलेले आहेत, त्यामुळे सगळ्या ग्रुप्स मध्ये सगळे इन्स्ट्रक्टर्स इंटरॅक्ट करू शकत नाहीत. पण हा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म असा आहे वेअर वी कॅन हॅव all 500,000 students together and we can interact with them. त्यामुळे आम्ही हे एक प्रयोग सुरू करतोय, आणि थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर रिस्पॉन्स. सो आजच्या सेशन मध्ये यू मस्ट बी ऑल नोईंग अबाउट आवर रिसेंट एव्हरेस्ट एक्सपिडिशन विच वॉज सक्सेसफुल ऑन 21 May 2026. अँड त्या एक्सपिडिशन मधले जे सगळे एव्हरेस्टर दादा होते, ते चौघही एव्हरेस्टर दादा आणि त्यांचे लीडर, म्हणजे अर्थात आमच्या सगळ्यांचे आवडते लीडर आणि सगळ्यांचे गुरु मी म्हणेन, कारण आजच्या ऑकेजनला गुरुचं आपण खूप महत्व मानतो, आणि गुरु इज समवन हू गाइड्स अस थ्रू आउट द लाईफ. तर आपल्या ह्या सगळ्या एक्सपिडिशन्सचे लीडर उमेश झिरपे सर हे पण आपल्या बरोबर असणार आहेत, आणि त्याचबरोबर चौघही दादा जे समिटला गेले ते असणार आहेत, आणि आपण छान गप्पा मारणार आहोत. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ऑल द Everest summiters of Giripremi 2026 expedition. Vivek Shivade. Vivek Dada. Hello everyone. He is known and popular in entire Ahwan Nirman Udan and all the ANU, wherever ANU is happening in all the schools. So Vivek is a senior mountaineer of Giripremi. He has done his BTech MTech from IIT Powai, and then doing his career in mountaineering. So right from day one of Mountaineering Institute started, he is part of our institute. So thank you, Vivek. Vivek has also scaled other peaks like Mount Kanchenjunga, Mount Ahmadabalam, and he is going to share his Everest story with us today. We also have Mihir Jadhav. Hello everyone. Yes, Mihir is also senior mountaineer of
Giripremi, and many students know him as Mihir Dada, and the most jolliest and approachable person on the trek. तर मिहीर सुद्धा गिरीप्रेमीचा एक मेंबर आहे, ज्यांनी डिप्लोमा इन माउंटेनिअरिंग या गिरीप्रेमीच्या कोर्स मधून गिरीप्रेमीत प्रवेश केला. अँड देन ही वेंट ऑन समिटिंग वन आफ्टर द अदर माउंटन्स अँड not stopping, I would say, at Everest, but the recent milestone for him was Mount Everest. Very tough, physically fit, आणि खूप experienced mountaineer आहे. आणि Mihir also is going to share his story with us. Welcome, Mihir. Then we have Akhil Katkar. Akhil गिरीप्रेमी मध्ये गेली एक 7-8 वर्ष आहे. And Akhil, are you there on camera? Yes, I am. Hello. Yes. हॅलो अखिल. सो अखिल दादा पण निर्माण ऍडव्हान्स उडान ह्या लेवल्स मध्ये अखिल दादा जात असतो ट्रेकला. अँड किड्स नो हिम बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, किड्स नो हिम बिकॉज ऑफ हिज लाइकिंग इन फूड, अँड ही इज ऑल्सो अ ग्रेट शेफ, अँड ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो ट्रेन्ड इन न्यूट्रिशन अँड डाएट. आणि त्याचं काही स्वतःवर त्यांनी जो काही प्रयोग म्हणण्यापेक्षा जे त्यांनी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट केला तो आपल्याला नंतर शेअर करेल. बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द समिटर्स ऑफ 2026 एव्हरेस्ट एक्सपिडिशन. सो वेलकम अखिल. आणि वी हॅव निकुंज. सो निकुंज, वेलकम टू द प्रोग्राम. आणि आपला हा जो प्रोग्राम आहे, पण सगळे आव्हान निर्माण उडान स्टुडंट्स अँड ऑल द स्टुडंट्स ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 10 to 16 who are part of Giripremi's adventure education program. Nikunj is one who has started his journey with Ahvan Nirman Udan itself. He is the student of first Ahvan Nirman Udan, and today he is part of Everest expedition and speaking to Ahvan Nirman Udan students. So that's Nikunj. So welcome Nikunj. So या चौघांबरोबर आपण गप्पा मारणार आहोत. मामा, तुम्ही आहात का? Mama? Yes. Yes. And let's welcome उमेश झिरपे सर, अर्थात मामा, ज्यांना आम्ही सगळे गिरीप्रेमी मध्ये आणि पूर्ण माउंटेनिअरिंग कम्युनिटी मध्ये मामा म्हणून ओळखतात. शिवछत्रपती अवॉर्ड जो महाराष्ट्राचा असतो त्यांनी सन्मानित आहेत. त्याचबरोबर जो राष्ट्रीय पातळीवरचा ऑन द नॅशनल लेवल तेन्झिंग नोर्गे नॅशनल ऍडव्हेंचर अवॉर्ड ज्यांना मिळाला आहे, असे मामा अर्थात उमेश झिरपे. आज ते भारतामध्ये नाहीयेत, पण तरी सुद्धा आजच्या या ऑकेजनला ते आपल्या सगळ्यांशी कनेक्ट झालेले आहेत. सो वेलकम मामा. आणि आपण हे सगळं पुढचं इंटरॅक्शन सुरू करण्याच्या आधी मी क्विकली फक्त मामांना आपल्या सगळ्यांना गुरुपौर्णिमेच्या शुभेच्छा द्याव्यात आणि थोडक्यात 1 मिनिटात आपल्या ह्या एव्हरेस्ट 2026 मोहिमेचं वेगळेपण सांगावं अशी मी विनंती करतो. सगळ्यांना आजच्या शुभेच्छा. So I welcome all of you on behalf of Giripremi Mountaineering Institute. आणि yes, आज हे गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं जे सेशन सुरू केलंय इन्स्टिट्यूट मधून, yes, that will be very useful for all of you. In our life, the importance of Guru is, we know what is the importance of Guru. गुरु का महत्व हर क्षेत्र में बहुत होता है, और माउंटेनियरिंग में जो हम लोग सीखते हैं गुरु से, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है. मेरी भी जो शुरुआत हुई है, मुझे भी जिन्होंने सिखाया है, मेरे गुरु है अविनाश फौजदार है, आनंद पांडे सर है, उषा प्रभा पागे है. तो इनसे जो मैंने सीखा वो आज तक मेरे लिए एक पाथवे बना है, एंड दैट ऑलवेज हेल्प मी टू लीड माय लाइफ. आज ये इस सेशन में जो आपको मेरे टीम से जो सीखने को मिलेगा, आई विल से, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्टोरी इन द एवरेस्ट एक्सपीडिशन. यस, एवरेस्ट इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज, बड़ा चैलेंज है एक माउंटेनियर के लिए. एंड टू टेक दिस चैलेंज, टू फेस दिस चैलेंज, क्या क्या करना पड़ता है, what happens when we climb Everest, and how we overcome the hurdles, we get success. ये सब कुछ जब आप जान लोगे तो इसमें से आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा. जब सिचुएशन आया था कि एक किसी मेंबर को नीचे जाना है तो कितना डिफिकल्ट था. जब सिचुएशन आया था कि अपने सामने कोई मर रहा है
सबमिट करने के बाद हम लोग नीचे आ रहे हैं मेरी टीम, और उनके सामने कोई किसी की जान जा रही है, तो क्या क्या फीलिंग होती है, ये सब कुछ आप इस सेशन में जान जाओगे। टू टेक दिस चैलेंज, वापस मैं बोल रहा हूँ कितना डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, एंड ये सब करने के बाद व्हाट यू गेन फ्रॉम दिस एक्सपीडिशन, ये भी आपको पता चलेगा। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी यूजफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। और गुरु पूर्णिमा का इस अवसर पर ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करना और इसका लाभ लेना, ये एक बेहतरीन मौका है। सो और आप सब लोग इसमें ज्वाइन हुए, तो इसलिए आपको सबको मैं बधाई देता हूँ। ये हमारा 26 का एवरेस्ट एक्सपीडिशन था। दिस वाज द थर्ड एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय गिरिप्रेमी। ऑल ऑफ यू नो 2012 में गिरिप्रेमी ने इंडिया का बिगेस्ट सिविलियन एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद 2013 में भी एक्सपीडिशन था, एंड अगेन आफ्टर 14 years वी ऑर्गेनाइज द एक्सपीडिशन इन 2026 टू गिव चांस टू अवर यंग माउंटेनियर्स, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है। एंड इसमें विवेक, मिहिर, अखिल और निकुंज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और एक बहुत सक्सेसफुल एक्सपीडिशन इसमें हो गया। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको सुनना है, इन सब के साथ आपको बात करने का भी एक मौका है, और इसमें से जो लर्निंग्स मिलेगी, मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक गाइडलाइंस जरूर हो जाएंगी। और एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि बस यू आर ऑल आर ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। बहुत बहुत ही आनंद होता है। मैं यहाँ यूएस में हूँ और मैं यहाँ बात करता हूँ 2-3 प्रोग्राम में। कल ही एक प्रोग्राम हुआ, और उसमें मैं जब बोलता हूँ कि इंडिया में, भारत में गिरिप्रेमी ने एक ऐसी इंस्टीट्यूट चालू की है 10 साल पहले, एंड हमारे बच्चे उसमें इतनी अच्छी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। संडे वो लोग एडवेंचर के लिए जा रहे हैं। तो ये सब सुनकर इतना यहाँ सपोर्ट मिल रहा है कि पीपल आर एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ के जो लोग यहाँ यूएस में आए 25 साल पहले, 30 साल पहले, वो सब लोग कह रहे हैं कि हम जब थे इंडिया में, भारत में थे, ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, और इतना अच्छा लगता है ये देख के। एंड डेफिनेटली वी विल सपोर्ट दिस इंस्टीट्यूट। ये सब कुछ है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि गिरिप्रेमी ने इंस्टीट्यूट यस जरूर चालू किया, बट विदाउट यू द इंस्टीट्यूट इज इनकम्प्लीट। क्योंकि क्या करना है हमें, किसको सिखाना है, तो आपका जो पार्टिसिपेशन है, आपके पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है, दैट इज वेरी वैल्यूएबल। और ये करते रहिए, एडवेंचर करते रहिए। और यस, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। थैंक यू। भूषण, प्लीज कंटिन्यू। Yes, thank you, Mama. And now we are going to move to the next session, next part of the session, where we are going to interact with all the Everesters. And to lead that session, I invite one of our Dadas, Rahul Dada. Rahul Dada is going to take us through one interesting part also. Before we start with main session, let's have little fun. We are going to have poll, and everyone can go in the poll section, tool section, and attempt the first question, and that is going to be, and you have 30 seconds for that. Yes, the question is launched. So the height is 8848.86 मीटर. ठीक आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की एव्हरेस्टची हाईट 8848 आहे, आणि रिसेंटली त्याच्या मागची थोडीशी छोटीशी गोष्ट ती म्हणजे आताच रिसेंटली त्याचं परत एकदा मॅपिंग झालं होतं, आणि तिथे पाहिलं तर आपण 0.86 मीटर हाईट वाढलेली आहे, आणि लवकरच परत जेव्हा त्याचं अजून एकदा मोजणी होईल तेव्हा कदाचित ती 8849 मीटर होईल. ओके, so let's move to next question. By the way, first poll was answered by 98 people. The correct answer was given by 98 people. So congratulations all of them. Wonderful. Let's see कितने लोग second answer भी बढ़िया देते हैं. Okay, so those who have answered Radhanath Sikdar, that is the correct answer. The next quiz, next poll is coming up. Be ready now. Okay, so question ये है कि at what camp lies the South Pole? Is it Camp 1, is it Camp 2, or is it Camp 4? Okay, so 100 people, close to 100 people voted now, and 54 have given the right answer, Rahul Dada, which is Camp 4. Yes, thank you, Rahul. So
चलते हैं आगे। फिर राहुल दादा भी बहुत ट्रैक पे रहता है आप सबके साथ, एंड यू ऑल मस्ट हैव मेट राहुल दादा। सो दो थर्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर 64 लोगों ने सही दिया है, जो कि कैंप 4 है। बाकी 35 लोगों ने कैंप 2 दिया, 8 लोगों ने कैंप 1 दिया। बट कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने सही आंसर दिया। अभी ये सब हमने जो पोल्स करे हैं, लेट अस हियर फ्रॉम द एक्सपर्ट, लेट अस हियर फ्रॉम द रियल हीरोज, फ्रॉम द एवरेस्टर्स देमसेल्फ। तो पहले, इवन बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू और इंटरैक्शन, एक मैं क्विक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगा। सबको एक एक क्वेश्चन पूछेंगे एंड वील हियर द आंसर इन जस्ट 1 मिनट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है मिहिर दादा के लिए। बहुत से लोगों को, आपको भी यही सवाल होगा आपके मन में। मिहिर दादा, आर यू देयर? Yes, am I audible? यस। तो सवाल है आपके लिए कि व्हेन डिड यू सी एवरेस्ट फर्स्ट? जैसे अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने पहले एवरेस्ट कब देखा? Yes, so 3 years back, I went on Everest base camp trek, and वहाँ पे गोरक्षेप के पास एक छोटा पीक है, इट इज कॉल्ड एज काला पत्थर। सो दैट फ्रॉम दैट काला पत्थर पहली बार मैंने एवरेस्ट देखा था, एंड उस टाइम पे लगा था कि अगर कभी मुझे चांस मिला एवरेस्ट क्लाइम करने का तो कैसा होगा। यस, एक्सीलेंट। तो ये ऐसे ही होता है, जब पहली बार कोई भी एवरेस्ट देखेगा तो उसका यही होगा। एंड मेरे ख्याल से अभी आप सब लोग स्क्रीन पे एवरेस्ट देख रहे हो, तो यू कैन कीप दिस पिक्चर एट द बैक ऑफ द माइंड। क्या पता कल आपसे हम स्टोरी सुने, राइट? सो थैंक यू मिहिर। आपको और भी क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा विवेक दादा से। विवेक दादा, आर यू देयर? यस यस। सो हमने अभी देखा कि 8848.86 मीटर्स हाइट है एवरेस्ट का। तो कैन यू एक्सप्लेन अस कि वो हाइट मतलब क्या है, क्विकली? यस, तो 8848.86 वो एलिवेशन है जहां से जेट्स हमारे एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। तो अगर आप इमेजिन, अभी आप सब लोगों ने ट्रैक्स किए रहेंगे सह्याद्री में, जैसे कि सिंहगढ़ जो 4300 फीट उसकी ऊंचाई है। नाउ एवरेस्ट एट ए हाइट ऑफ 8848 मीटर्स यानी कि 29,000 फीट। Imagine stacking 7 one on top of the other. That much of high is Mount Everest. And as you go climb higher, there are challenges of low temperature, low oxygen, extreme cold, and on top of that, this mountain is in the extreme remote region of Nepal as well. So it is that remote and that high mountain. Yes. We are also eager to hear more challenges and more stories from you. But next, भूषण, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग ऐड करना चाहता हूँ। जो हाइट क्वेश्चन था पोल में 8848.86, तो सबको बताना चाहता हूँ कि जब एवरेस्ट राधानाथ सिकदर इन्होंने जब एवरेस्ट का मेजरमेंट लिया था तो दैट हाइट वाज 8848 मीटर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात एवरेस्ट में ये है कि एवरेस्ट का हाइट हर साल इट इज द एवरेस्ट इज ग्रोइंग पॉइंट बाय 2 मिलीमीटर्स। उसका ग्रोथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो टाइटेनिक प्लेट से एवरेस्ट बन गया है तो एक दूसरे के ऊपर उनका जो टक्कर हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट एवरेस्ट इज ग्रोइंग बाय 2 मिलीमीटर्स ईच ईयर। और इसके लिए और इसको प्रमाणित करने के लिए एक एक्सपीडिशन हुआ था 4 साल पहले, और इसका हाइट अभी 8848.86 है। तो ये एक बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। यस, प्लीज कंटिन्यू। Yes, thank you, Mama. Thank you. And now अखिल, मेरा आपसे क्वेश्चन है अखिल दादा से. तुला एक विचारायचंय मला की येस 7 वेळा सिंहगड, म्हणजे 7 सिंहगड एकावर एक उंच चढायचे. आता आपण एक सिंहगड चढायचा तर भरपूर वेळा प्रॅक्टिस करतो. When we have to climb सिंहगड, we go again and again. So how did you prepare for 7 times सिंहगड, or in simple words Everest? वैसे तो हमने 2 साल के लिए तैयारी की इसके लिए। तो आप सबने देखा होगा कि आप जब सिंहगढ़ जाते तो मे बी 1 आवर या 1.5 आवर्स, कभी कोई 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 लोग 30 मिनट में भी कर लेते हैं। लेकिन ये सो वी वर लकी कि हमारे बाजू में सिंहगढ़ है जहाँ पे हम बार बार जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम जाके 2 बार 3 बार भी एक टाइम पे करते थे। और उसी टाइम पे वी यूज टू कैरी बैकपैक्स विद 10 15 20 किलोज। और इस तरह से हमने पूरा प्रिपरेशन किया। इसी के साथ हमने बहुत सारे रेंज ट्रैक्स भी किए, जैसे कातरस से सिंहगढ़, सिंहगढ़ से राजगढ़, वहां से आगे तोरना। सो ये पूरा का पूरा ट्रेल जो है वो एक ही साथ
कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक्स हमने किया. सो ऐसे रेंज ट्रैक्स भी बहुत हमको हेल्प करते थे इसके प्रिपरेशन के लिए. यस, इसके बारे में और भी बात करेंगे. निकुंज, एक आपके लिए सवाल है. निकुंज, तू तर ANUचा स्टुडंट आहेस आणि यू आर द यंगेस्ट इन द टीम. सो while preparing for Everest is like very big for all of us. हमारे सबके लिए अभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एवरेस्ट के बारे में जब सोचते हैं तो when you thought of it, और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, did you at some point of time ऐसे लगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, कितना मुश्किल है, ऐसा कोई हुआ था, ऐसा लगा था कभी? यस दादा, डेफिनेटली. 2 साल हम जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो 2 सालों में जितना भी हम एवरेस्ट के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे, बिकॉज एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो. सो थोड़ा एंग्जाइटी तो रहता ही है कि यार कैसे होगा, हम कैंप 1 कैसे जाएंगे, खुम्बू ग्लेशियर जो इतना डेडली है, जो इतना लोग बोलते हैं कि उसमें आइस ब्लॉक्स गिरते रहते हैं, तो वो हम कैसे क्रॉस करेंगे, हाउ विल कैंप 2 भी, कैंप 3 भी, और साउथ कोल मेन जो है जहाँ पे इतना विंड चलता है. सो ये सब थॉट्स वापस वापस आते ही रहते हैं दिमाग में, बट यू कंसिस्टेंटली कीप ट्रेनिंग and just keep the goal of reaching the summit at, so that makes it easier. थैंक यू निकुंज. तो और भी सुनेंगे सभी चारों लोगों से. अभी चारों दादा को आप जानते हो, पहचानते हो, बट बिफोर वी स्टार्ट मोर डिटेल, पहले एक बार देख लेते हैं व्हाट इज एवरेस्ट. जो एवरेस्ट की अभी फिल्म है, एक शॉर्ट फिल्म है, वो शॉर्ट फिल्म हम देखेंगे और उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर. आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग. जस्ट शो वन थंब if you are enjoying. Thank you very much. Let's play the video and let's see. This film is also available on YouTube. तो बाद में आप YouTube पे देख सकते हो, शेयर कर सकते हो. Earlier Everest expedition was planned in 2013, and after that 14 years this was another team of young mountaineers. हेलो, दोनों का सबमिट हो गया? ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू.
मला असं वाटलं होतं की होणार नाही. Thank you. So this film is also available on YouTube, and full film of this is in making. So जल्द ही हम वो पूरा film देखेंगे. But ये clip आप देख सकते हो. We will share the link of YouTube on this. Now my next question is to Vivek Dada. Vivek Dada. So we have seen this 50 days, 50 plus days of expedition. मतलब इतने दिन आप mountain में थे, तो इतने दिन क्यों लगते हैं? Can you put a light on that? Yes. So as I said in the beginning, Everest is the highest mountain at a height of 8848 meters and very remote region of Nepal. So to go to the base, it takes at least 10 days to the base of the Everest. We have to fly from Pune to Kathmandu, the capital of Nepal. From Kathmandu, there is another short but very equally thrilling flight to a village called Lukla. And from Lukla, we start trekking to the base of Everest, which is also at a very high altitude of 17,500 feet. So after reaching to the base, our actual mountain climbing begins. Till there, that point, it is a trek. But beyond that, actual technical mountain climbing begins. Now, from a height of 17,500, we cannot directly go to 29,000 feet. We will get tired, right? So we have to go step by step. So for that, we follow a principle of mountaineering, that is climb high and sleep low. So what we do is from base, once we reach to the base camp, we perform mountain puja. After taking the blessings of the mountain, we start climbing. So first, our first climb happens from base camp to camp 1 and again back to base camp. So again, we spend couple of days at base camp. Then we prepare for another rotation, wherein we go from base camp to camp 1. From camp 1, next day we go to camp 2, and next day we come back to base camp. So this process is called as rotation, and that is important to acclimatize our body for cold conditions, thin air, and low oxygen content. This way, once we get used to our body, used to the low pressure conditions of Everest, we then wait for a good weather window. Now, what is weather window? Generally, throughout the year at the summit of Everest, winds keep blowing at a speed of 200 to 250 kilometer per hour speed. At such winds, we cannot climb. We cannot be there on top of Everest. But there are times, especially in the month of May, wherein these winds shift to the higher elevation for around 10,000 meters. So in such condition, there are a few days wherein winds at summit of Everest are around 30 to 40, at max 50 kilometer per hour speed. In such situation, you can definitely reach to the summit of Everest. And that is called as weather window. So we have to plan after completing our rotation, we have to plan based on the weather forecast reports. We have to plan the summit push. So once we are ready, we know that we are going to reach to the summit on 21st May. We start preparing from the base camp on 17th of May. So next we go to camp 2, next day we go to camp 3, then to camp 4. And on the same day when we reach camp 4, at night, we go to the summit of Everest and try to come back as soon as possible to the base camp. So this whole process takes a long time, and that is why it takes around 45, 50 to even 55 days to the successful completion of entire expedition. Great, amazing.
We will be having question answer session at the end, but right now I think Varun Dada has some question. Kai Varun Dada tula? He has raised the hand. विवेक सर, आपके लिए क्वेश्चन था कि अभी यू सेड दैट यू टुक somewhere near 50 days to complete this expedition. Yes. So you did not bathe for the duration of 50 days or what? आप Yes, लोग नहाए नहीं? that's quite. I think ये सवाल बहुत लोगों के सबके दिमाग में मन में एक होगा. सवाल रहेगा. Yes, yes. वरुण. तो आई एम श्योर हम सब लोग घर पे पुणे में, मुंबई में यहाँ हर दिन नहाते हैं, राइट? और अगर एक दिन अगर नहीं नहाए, 2 दिन नहीं नहाए, तो कैसा वी फील स्टिकी, राइट? A bit uncomfortable. But that's the kind of situation we had when we were at the base camp. Nearly 2 weeks. Generally, we did not bathe. But the reason for that is very simple. Water is one of the most important resources, so we cannot every day keep on having bath. Although it is available, but we have to preserve resources. At the same time, at such altitude, it is not even recommended to take bath daily. So you may even catch cold. So, but at the same time, it is also equally important to maintain your hygiene. So we used to do the sponge bath, which means clean up our body's faces with wet tissues and all, thereby remain uh, hygienic and at the same time, save resources. Only once in a while we could manage to have bath, which was really a luxury. But yeah, that is how we managed our resource planning as well as hygiene maintenance. Yes, thank you, Vivek Dada. It was very interesting. Next question is for Akhil Dada. Akhil Dada, we have heard this Sherpa word. So आप सबने भी, बच्चों ने भी सबने सुना होगा Sherpa. So even we know that the first summiters of Everest was Sherpa Tenzing Norgay and Edmund Hillary. तो ये शेरपा के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे and त्यांचा नक्की रोल काय असतो? What role they do they play in the entire expedition? यस. सो शेरपा जो है ना, शेरपा की पूरी जो कम्युनिटी है वो तिब्बत से माइग्रेट होके इस रीजन में सेटल हुए ओवर द इयर्स, और उनका बेसिकली जन्म और ये सब उसी एल्टीट्यूड पे होता है, अराउंड 5000 मीटर्स के आसपास, एंड देयर चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग ऑल्सो उसी एल्टीट्यूड पे होता है. तो इनका जो इम्पोर्टेंस है ऐसे एक्सपीडिशंस में इज उस एल्टीट्यूड पे बहुत सारा काम करना पड़ता है. जैसे हमारे टेंट्स है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ये सब ऊपर लेके जाने हैं, और हम जैसे जो यहाँ पे सी लेवल पे है, तो उनके लिए वहाँ पे ऐसे लोगों का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो व्हेन द रूट फॉर द माउंटेन इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे खुम्बू ग्लेशियर है, खुम्बू आइसफॉल का जो एरिया है, वो वहाँ से पूरा रोप का सेटअप करना टिल द समिट, वो सब भी काम शेरपा लोग ही करते हैं, क्योंकि उनका माउंटेन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है. और विदाउट द हेल्प ऑफ दी शेरपाज इट इज़ इम्पॉसिबल टू समिट अ माउंटेन लाइक माउंट एवरेस्ट. और बाकी के भी बहुत सारे रीजंस है कि शेरपा लोगों को वहाँ पे उस एल्टीट्यूड पे थोड़ा सा हमसे आसान हो जाता है काम करना. तो विद देयर हेल्प वी टेक ऑल आवर टेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड एंड वाटर एज वेल टू द हायर कैंप्स. तो वो हमको इसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. येस, थँक्यू. अजून तुला प्रश्न आम्ही विचारूच अखिल दादा, पण वरुण दादा काही आहे का तुला क्विक मगाच सारखा क्वेश्चन? येस, अखिल, मला एक प्रश्न होता तुमच्यासाठी की तुम्ही हाऊ डिड यू मॅनेज फूड अँड ड्रिंकिंग वाटर ॲट दॅट अल्टिट्यूड? सो बेस कैंप पे तो जैसे बेस कैंप जहाँ पे सेटअप होता है वहाँ पे पूरा जैसे गांव क्रिएट हो जाता है फॉर द सीजन, तो वहाँ पे सप्लाईज बहुत अच्छी तरह से आते हैं. लेकिन इसके आगे जो है कैंप 2 से लेके कैंप 3, कैंप 4, यहाँ पे फूड थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है. तो वहाँ पे हम सिर्फ पानी में जो बनता है, गर्म पानी में डाल के जो बना सकते हैं, उतना ही सब कुछ खा सकते हैं. तो पानी भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, सारा फ्रोजन है, मतलब आइस है या स्नो है. तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज मेक वाटर. तो हमारे पास ऐसे छोटे ब्यूटेन के कैनिस्टर्स होते हैं, और उनके ऊपर बहुत लाइट वेट वेसल्स होते हैं जिसमें हम बर्फ डाल के उसका पानी बनाते हैं. और फिर वो पानी जैसे गर्म होगा, उसमें जो कुछ भी है, जैसे हमारे पास 3 ऑप्शंस थे वहाँ पे, एक तो सूप था और मैगी था, और एक चंपा नाम का चीज होता है, वो लोकल शेरपा लोगों का डेलिकेसी जैसे है. वो बेसिकली बहुत कुछ न्यूट्रिशियस पाउडर जैसे होता है, वो गर्म पानी में डाल के उसका पेस्ट बना के खा सकते हैं. तो कैंप 2, 3, 4 यहाँ पे इस 3 चीजों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था.
तो वहीं पे शेरपा लोगों की मदद के साथ वो सब बना के, पानी बना के, उसमें खाना बना के हम खाते थे। Oh, great. No Thank doubt. you. Okay, for all the kids, we will be asking your questions also at the end. Maybe we have another 10 minutes of question answers, and then we will have your questions also. By the time, you can keep posting your questions in the message box. Thank you. So my next question is to Nikunj. Nikunj, एवरेस्ट में विवेक दादा had told कि death zone है because at the altitude there is something called death zone. तो ये डेथ झोन क्या है आणि तुला भीती नाही वाटली का डेथ झोन म्हटल्यानंतर ऐकून, किंवा व्हॉट इज इट ऍक्च्युअली? म्हणजे तिथे काही डेड बॉडीज बघायला मिळतात का? व्हॉट इज इट? Yes. So basically, first talking about the death zone. So death zone, it refers to a region which is above approximately 8,000 meters on mountains like Everest, and it is called a death zone because हमारा जो human body होता है, it simply cannot survive there for long. So जैसे वो ऑल्टीट्यूड रहता है, लाइक आप जब 8,000 मीटर के ऊपर हो, सो उस ऑल्टीट्यूड पे ऑलरेडी द ऑक्सीजन विच इज अवेलेबल, दैट इज 1/3 ऑफ द ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन द सिटी एरिया. सो मतलब अभी हम जो सिटी एरिया में है, उधर हमारा ऑक्सीजन इज 21% सैचुरेशन इन द एयर वी आर ब्रीदिंग राइट नाउ. एंड जब हम इस साइड पे जाते हैं तो वो सैचुरेशन और कम हो जाता है. सो unlike we are breathing here at these altitudes, the body cannot acclimatize permanently in the dead zone. So instead of adapting, we slowly begin, instead of adapting to that temperature, our body slowly keeps deteriorating. That's why it is called the dead zone. And in this, the side effects are like आपका thinking slow हो जाता है, your decision making is affected, coordination आपका कम हो जाता है, and even simple tasks like clipping into a rope, like आपका carabiner rope में डालना also becomes a very difficult task for you. So इस altitude पे every step it feels exhausting because our muscles aren't getting enough oxygen. And in this altitude the risks are very high because climbers become vulnerable to illnesses which are life threatening. So जैसे आपने सुना होगा कि हेस और हेप होता है, मतलब high altitude cerebral edema and high altitude pulmonary edema. So cerebral edema मतलब आपके ब्रेन में पानी होना, और pulmonary edema मतलब आपके लंग्स में पानी होना. So ऐसे चीजें भी आपके हाई altitude में, ये डेथ जोन में हो सकते हैं. So that's why every minute spent above 8,000 meters always matters. And when we are going in the death zone, so the entire summit strategy, it is built around minimizing the time which we spend in that zone, because we carefully monitor all the weather forecasts, then climbing speed of each member plus oxygen flow rates, क्योंकि हमारे पास supplemental oxygen रहता है जो हम कैंप 2 से ऊपर लगा के जाते हैं, and so our body does not deteriorate. So everything is properly planned until we reach the summit, and coming down out of that death zone is also that much important, and that's why everything has to be planned properly. Correct. Thank you, Nikunj Dada. Varun Dada, any question? Because I have other questions here also posted. Yes, I can ask them. I think many of the audience is interested in knowing. So I'm also curious to understand. Nikunj, how did you litter? How did you call, or like how did you answer to nature calls? That's a very interesting question. Often people think that climbing is the hardest part for Mount Everest, but even going to the toilet at that altitude, it becomes a challenge. So like as Akhil already mentioned, that base camp एक छोटे गांव जैसा ही है, तो उधर आपको सब facilities available रहते हैं. So like that you have a proper toilet tent also in which you can go, and आप आपका काम उधर कर सकते हो. बट जैसे आप ऊपर जाते हो, लाइक वंस यू लीव द बेस कैंप, कैंप 1 हो गया, कैंप 2 हो गया, कैंप 3 या कैंप 4 हो गया, उधर जाने के बाद कैसा होता है, लाइक इवन इफ इन द नाइट द टेम्परेचर गोज अराउंड -20 -30, so you don't even feel like getting up and going out if you want to pee. So usually climbers carry a bottle in which they pee, and जो आपका एक्सक्रीशन है, सो उसके लिए एवरेस्ट पे आपको पू बैग्स करके एक बैग दिया जाता है.
so which is a special bag जिसमें आप आपका excrete करते हो, and in some time it becomes hard, so it is easy for you to carry it down, because Everest mountain clean रखना भी एक बहुत important part होता है, and that's why such measures are taken, so ऊपर कचरा नहीं होता, and everything can be brought down. So there are such Yes. things available on the mountain which you can do. Yes, it is very interesting to know that, Nikunj. Thank you. I'm sure सबको भी एक नया information मिला इससे. Mihir, for you, the question is, there are a lot of challenges in Everest, as we can see in the video, Vivek. I think someone is jumping on the crevasses. So, can you quickly explain the kids that what are the step-by-step challenges, like from base camp to the summit? Yes. So I will start from base camp. Actually, base camp is a pretty safe place, but Yes. at that altitude, 5,300 meters, staying fit and active for a month, it's a challenge. Yes. And the next challenge after that in an actual climb is first death zone, we call it, before going to actual death zone, that is Khumbu ice fall. There are many ice seracs, around 2 or 3 floor big seracs, then crevasses. So the danger is always upon us on that section. After that, reaching camp 1, between camp 1 to camp 2, there is it is called as Western Comb. So here main challenge is temperature difference. अगर रात में आप देखोगे तो टेम्परेचर ट्रिमेंडसली कोल्ड होता है, एंड देन द सन राइज अप द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हॉट. सो ये डिफरेंस जो है बॉडी को टैकल करना पड़ता है फॉर दैट पीरियड. एंड देन द नेक्स्ट actual difficult climb begins after that. It is known as Lhotse phase, which is a 70 to 75 degree wall after camp 2, and it continues till the camp 4, which is made up of hard blue ice, and it takes very technical skills to climb that wall. Then when you reach camp 4, the death zone, what is death zone? We climbers actually feel that the less density, as Nikunj said, the less density of oxygen and the atmospheric pressure, it actually thrilling over there. After that, we start our summit push after camp 4 around 7 p.m. At the night. So walking in that dark with the supplementary oxygen, and on the slope of 70 to 75 degree, that was the main challenge of summit attempt. There is one more challenge, that is Hillary step. Everybody knows about it. Yes, someone also asked about the Hillary step. Yes. Yes, so that Hillary step is the rocky structure, or a rock wall, I would say, at the altitude of 8,800 meters. We have done so many rock climbing in Sahyadri. So just मतलब आप लोग ये कर सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होता होगा ऑक्सीजन लगा के एंड crampons पहन के वो rock face climb करना at that altitude. Yes. Thank you, Mihir. Okay, बहुत सारे questions हैं. मैं तो कहता हूँ इतने सारे question देते तो संडे आ जाएगा, और संडे को हमारा ट्रैक है, तो ट्रैक में भी सारे सवाल के जवाब मिल ही सकते हैं. अगर आप ट्रैक में आओ तो ये सारे एवरेस्टर्स दादा भी ट्रैक में रहेंगे. But no, on a lighter part, Varun, do you have any question here for Mihir? Yes, Mihir, you all said that you stayed there for almost 50 days. So is there network facility available? How did you contact to your home? Yes, so there is one funny incident. Actually base camp में proper network, मतलब Wi-Fi, internet available है.
when we reached Camp 2, me and Vivek sir हम लोग बैठे थे टेंट में, एंड मेरा वाईफाई जो है वो ऑन रह गया था. So suddenly my phone starts ringing, and मतलब मैं और विवेक सर दोनों शॉक थे कि at Camp 2 of Everest uh, we found network, and we did video call to our families from there, from Camp 2. So yes, Camp 2 पे भी network है thanks to Elon Musk. Yes, that was the incident. Yes, this is, I think, a very ये तो एक्साइटिंग न्यूज हो गई सबके लिए. अब तो सब लोग जाएंगे एवरेस्ट फिर वीडियो कॉल करने के लिए. Great. So thank you all of you for the nice interaction. We have still more questions to come, but let me tell you all the kids and parents that we will be having a quick rapid fire rounds also with them. And this session was planned till 9 o'clock. But looking at the questions, I think this will go for another 15 minutes. So I request everyone to be in the meeting. And also this session is being recorded. तो इसको बाद में भी हम ग्रुप्स पे डालने वाले हैं, राइट? सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ किड्स हैविंग, जैसे मैंने अभी कहा, देयर विल बी वन क्विक रैपिड फायर राउंड, और उसके बाद हम और कुछ सवाल पूछेंगे हमारे दादास को. यस यस, सो रैपिड फायर क्वेश्चन के लिए मेरा पहला सवाल है विवेक दादा से. अगर अगर आपको एक्स्ट्रा रात गुजारनी है तो वो आप कहाँ गुजारोगे, कैंप 2 या कैंप 4 पे? Absolutely, always Camp 2. Okay. A question for Nikunj Dada. Most delicious meal at base camp? बेस कैंप पे हमने मैंगोज बहुत खाए, so that would be my delicious meal. Okay, interesting. My third question for like Akhil Dada. One thing you carried from home to the top? I didn't carry anything. I mean, वो दिमाग में ही नहीं आया था मेरे उस टाइम पे. So anyone else who carried something? I carried something very special. My 3-year daughter, after seeing so many flag off ceremonies where guests and dignitaries were handing over us the tricolor, when she saw all that, she picked up a Indian tricolor flag from her toys and handed over to me just before the departure and told me that, Baba, हा झेंडा वरती घेऊन जा नक्की. So that was very precious and perhaps the most memorable flag off ceremony for me. Yeah, that is so sweet. Thank you for sharing, Vivek Dada. And the fourth question for Mihir. Did you miss anyone at the top? Yes, definitely my father, because his dream I carried till the top. So definitely him. Yes. Okay. Thank you so much, everyone, for sharing it. Yes. थँक Over यू to राहुल you. दादा. ओके, इथे काही क्वेश्चन्स आहेत त्याला आपण ऍड्रेस करूया. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लेअरिंग. सो आय वुड आस्क विवेक दादा टू आन्सर अबाउट लेअरिंग, अबाउट क्लोदिंग. काहींनी विचारले थिक ब्लँकेट असतात का तिथे. सो इफ यू कुड जस्ट क्विकली टेल अस अबाउट द लेअरिंग ॲट दॅट टेम्परेचर अँड हाऊ डू यू स्लीप, व्हॉट डू यू यूज फॉर स्लीपिंग. So I'll tell you about the climbing part first. So when we are trekking to the base camp, we generally trek with full sleeve t-shirt, full track pant, and if it starts getting colder, we add on sweater or down jacket, or if it starts snowing or raining a bit, we add raincoat or poncho. But this is up to the base camp. But beyond base camp, we have to have some technical gears. Um, so in expeditions like Everest, there are challenges of low temperature, high winds, snowfall, occasionally rains as well in lower altitude. So we have to take precaution from all these aspects. So for that, we have to follow a layering system wherein initially we have a layer called base layer. It's a thin layer just next to our skin, full sleeve, upper layer, full sleeve, full lower layer. After that, we wear a t-shirt and a track pant. As we start climbing in the technical region, we have to add hard shell
pant and hard shell jacket. When it gets colder, we add on top of that a down layer. Especially at night, we wear these down jackets and we sleep in sleeping bags. There are no blankets. In some situation at base camp, they provide blankets as an additional facility. But from mountaineering perspective, for higher camps, we always have sleeping bags to cover ourselves. Inside the tent, there are mattresses upon which we sleep, and then we cover ourselves or we tuck inside a sleeping bag. But when we start climbing in the death zone, like beyond Camp 3, we add, there is a suit you must have seen in the photos, a suit similar to astronaut. It is called as down suit. So on top of our base layer, t-shirt and track pant, we add a layer called down suit. It protects us from extreme cold, extreme wind, and those snow conditions. So all such gears, clothing gears, this is just a list of clothing gears Yes, that yes. we have to don ourselves when we are climbing Okay. mountain like Everest. Yes, thank you. Let's hear from Mihir. Apart from clothing, what is technical gear? Because someone asked about oxygen cylinder, about technical gear, and about temperature, what temperature it is, and what are the precautions you take. So, can you quickly tell, and the weight of the entire gear? थोडक्यात सांगतोस हे सगळं? Yes, so entirely the expedition like Everest, you carry so many technical gears, including crampons, then the Jumar, which is the ascender, some few carabiners and harness, the snow boots. These all are gears which we carry, and मेनली ये जो गियर्स है उसमें जो एडिशन होता है फॉर 8000 मीटर एक्सपीडिशन, दैट इज ऑक्सीजन सिलेंडर एंड द ऑक्सीजन मास्क. तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर का जो वेट है इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 kgs टू 5 kgs, वेरी करता है वो. एंड वो आप लोगों को एक सिलेंडर उठाना पड़ता है, एंड योर अदर सिलेंडर्स कैरिड बाय योर शेरपा. वो पहले से ही कैंप 4 पे डंप होता है. एंड दीज ऑल इक्विपमेंट, वो जो टोटल वेट आपके बॉडी पे होगा वो अराउंड 10 kgs के आसपास होता है. एंड देन योर बैकपैक इंक्लूडिंग दैट सिलेंडर एंड अदर स्टफ यू कैरी. तो इसका अराउंड वेट 15 kgs के आसपास होता है. Yes, thank you, Mihir. So you can see Mama Umesh Shirpe sir, the leader of expedition, he's also answering a few questions on the message. So you can also refer to that. My next question is to Akhil Dada. Akhil Dada, can you tell us एखादा तुमच्या पूर्ण एक्सपिडिशन मधला the most dangerous experience that you had, and also tell us about how did you actually prepare, because we heard there is one story about your preparation and your physical training. So can you tell us that? Yes, of course. So सबसे डेंजरस पार्ट जो मुझे लगा उसमें, जो खुम्बू आइसफॉल है वहां पे, जैसे मीर ने बताया कि वहां पे बहुत क्रिवाइसेस और ये सब होता है, तो इस साल सबसे बड़ा जो क्रिवाइस था उसके ऊपर 5 लैडर्स लगे थे. और आपने शायद वो फोटो देखा होगा, पीछे कैरोसेल में चल रहा है, कि वो 5 लैडर्स के ऊपर से हमको जाना था. उसके नीचे जो क्रिवाइस थी इट वॉज प्रॉब्ली अराउंड 30 मीटर्स डीप. तो उसमें वहां पे हम दोनों साइड में रोप को अटैच करके उसके ऊपर से चलना होता है. और वैसे ही और एक बहुत डेंजरस मुझे लगा था जो कि समिट रिज पे था. जैसे साउथ समिट पे पहुंचते हो, वहां से नॉर्थ मतलब मेन समिट तक जाने के लिए एक पूरा रिज है जहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है. एक तरफ पूरी नेपाल के साइड की खाई है और दूसरी तरफ तिब्बत की साइड की खाई है. और उसके ऊपर से यू हैव टू कीप वॉकिंग. एक ही रोप है, उसमें हम क्लिप हुए, और वहीं पे आगे से आने वाले जो समिट करके वापस आ रहे हैं, या फिर हमारा समिट होने के बाद जब हम नीचे जा रहे थे तब नीचे से ऊपर आने वाले लोग जो थे उनको उनके बाजू से जाना पड़ता है. हमारा जो कैरेबिनर रोप में है वो निकाल के उनके आगे डाल के, फिर सो वी जनरली कैरी 2 एंकर्स. एक एंकर उनके आगे डालेंगे, फिर पीछे वाला दूसरा निकाल के उनके आगे डालेंगे. तो ये सारा बहुत डेंजरस पार्ट था.
पूरे एक्सपीडिशन में। और फिटनेस जर्नी के बारे में तो जैसे हमने पहले बोला कि 2 साल से कर रहे हैं। मेरा 2 साल पहले आई यूज टू वे 115 किलोज। वहां से 2 2.25 साल में आई केम डाउन टू अराउंड 80 किलोज। और उसके बाद ये जो कुछ भी एक्सपीडिशन है वो हुआ। तो या दैट्स अबाउट इट। येस, थँक्यू अखिल दादा. निकुंज, निकुंज दादाला मला विचारायचं आहे दॅट in the entire expedition, did you have any moment of setback or whatever experience that you maybe you would like to explain to us or share with us? की असं झालं का कुठे की तरी एक खूप मोठा धक्का बसला किंवा शॉक बसला, असं काही झालं का? हो दादा, माझ्या केसमध्ये सो इन माय केस ॲट दिस एक्सपिडिशन I had a few setbacks. One was the major one. So starting from the day we arrived at the base camp, so as told previously by Vivek Dada, we have to do acclimatizations rounds. So we also did our rounds as advised by Mama at the base camp to us, and in that we first climbed Mount Lobuche, which is a 6,000-meter plus peak. And after coming down from Lobuche, I had got severe cough, which is also known as the famous Khumbu cough, and I was recovering from it for around a week almost at the base camp. While having that cough, we still were doing the Khumbu activities and keeping ourselves active in the glacier as well. After that, again, one day I got really sick. I had fever. So हमारे कैंप में हमारे जो बेस कैंप के डॉक्टर थे उनको वायरल फीवर हो गया था. उनके बाद वो पास ऑन हुआ हमारे शेफ को, एंड फ्रॉम आवर शेफ द कुक को पास ऑन हुआ, एंड कुक से फिर it passed on to me. So one day I was totally bedridden. I could not even get up. उतना मुझे बुखार आ गया था. And the major setback of this expedition which I faced was while we were doing our summit push. So throughout the expedition, जब तक हमारा summit push आ रहा था, until then I was still fighting with all these illnesses which I was facing, and still performing well on the expedition. Like मेरा camp 1 जातक speed was good, camp 2 को जातक speed was good. In fact, camp 3 को जातक भी मेरा speed अच्छा था. But while our summit push was on, when I reached camp 3, तब मेरे chest में pain चालू हुआ, and unfortunately it was on the left side. And इतने जो हम 2-3 साल ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें कभी भी ये पेन मैंने पहले फील नहीं किया था. सो वो पहली बार ही मुझे एट द हाइट ऑफ 7,100 मीटर्स, जिधर कैंप 3 है, उस हाइट पे मुझे वो पेन फील हो रहा था. एंड जब नीचे डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ऐसे ही कहा कि सिर्फ एक नॉर्मल मसल पेन है. बट वो इतना दुख रहा था कि वो नॉर्मल से ज्यादा लग रहा था. ऑफ कोर्स मेरे साथ विवेक दादा, मिहिर, अखिल, ये सब भी थे जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है. वो भी मुझे वही कह रहे थे. सो उस दिन मैंने गोली खा के वो रात प्रॉपर रेस्ट किया. एंड नेक्स्ट दिन हम सुबह कैंप 4 जब जा रहे थे, सो कैंप 4 से एक 300-400 मीटर ऊपर येलो बैंड करके एक लोकेशन आता है. सो दैट येलो बैंड इज बेसिकली ए येलो कलर्ड स्टोन जहां से हमारा ट्रैवर्स शुरू होता है टुवर्ड्स कैंप 4. So yellow band is at 7,600 meters and camp 4 is at 7,900. So only 300 मीटर का फर्क था टू रीच कैंप 4. एंड उधर वो पेन वापस एस्केलेट हुआ. सो जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया, एक हायर डोज ऑफ मेडिसिन मैंने लिया. एंड अनलकी रहा मैं तब कि वो इतना हेवी डोज मेरे बॉडी को सहन नहीं हुआ. सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू टेक अ डिसीजन ऑफ टर्निंग बैक एंड leaving my expedition at 7,600 meters. because अगर मैं ऊपर जाता भी और ऊपर कैंप 4 में जाके अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता तो देन मेरे टीम का भी समिट कॉम्प्रोमाइज हो सकता था. because obviously they were not going to leave me there alone and let me come down only with my Sherpa. So overall these were the setbacks which I faced. But yes, mountain उधर ही है, we can go again. Yes, definitely, Nikunj. एक दिन जरूर you will summit the Everest. एंड अभी जैसे निकुंज को अनफॉर्चुनेटली वापस आना पड़ा, बट बाकी 3 लोगों ने सबमिट किया. तो सुनते हैं उनके हिसाब से
उनके तरफ से समिट के जो एक्सपीरियंसेस हैं. सो फर्स्ट लेट मी आस्क मिहिर, जब आप सब लोग समिट पे पहुंचे तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू सॉ? कैसे दिखता है समिट? यस. सो मैं विवेक सर और हमारे शेरपास हम लोग समिट रीच पे वेट कर रहे थे सनराइज होने का. एंड जो सनराइज हम लोग को लांब चालेल हे. was the best view I have. Bhushan sir, am I audible? Yes, 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 Mihir. you are Yes, Mir. yes, sir. Carry on, carry on. Yes. So वो समिट रीच से हम लोग को ऑन आवर राइट साइड हम लोग को एक सनराइज दिख रहा था. दैट वाज रियली ब्यूटीफुल. एंड देन आफ्टर दैट सामने वो सनराइज के लाइट में हम लोग को समिट दिखाई दिया फाइनली. जब हम लोग ने हमारे लेफ्ट साइड पे देखा एंड दैट व्यू, इट वाज मेस्मराइजिंग. एवरेस्ट का आइकॉनिक शैडो पूरा मतलब फैला हुआ था ऑन द Right. अदर माउंटेन्स. एंड दैट व्यू इज रियली Excellent. Wonderful, wonderful. So now my next question is to Vivek Dada. Vivek Dada, if you were on the summit and if you were to stay for some more minutes, what would you have done, or what would you have felt? तिथे अजून थांबायला कसं वाटलं असतं? तिथे when we were at the top, it was 4:35 o'clock in the morning. We were expected to reach there when we left so we were expected to reach at the summit by 7:38 a.m. But we reached way early. So it was extremely cold and extremely windy. So we tried our best to wait as long as we could, but a point came when it was time that we had to turn back, because actual summit happens not at the top of the mountain, but when we reach to the base camp. So if I had an opportunity to wait, I would have certainly wait for Akhil to reach, who came a little late to the summit. So we could have at least taken a photo where three of us on top of the summit. So I would have waited for that if I had an opportunity to wait at the top. Excellent. And Akhil, over to you. How was your summit experience? How did you feel? What was the thought in the mind when you reached to the top with the सच Indian biker and the top of the world? सच में बताओ तो जब मैं पहुंचा समिट पे तो फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स मेरा माइंड पूरा ब्लैंक था. मुझे आजू बाजू में इट इज सेड दैट यू कैन सी अप टू 380 किलोमीटर्स इन ईच डायरेक्शन फ्रॉम द समिट. सो जो नज़ारा था, एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको पूरा वेदर बहुत क्लियर मिला था, तो बहुत दूर दूर तक सारे हिमालय के माउंटेन्स दिख रहे थे. इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू. And for the first 10 minutes, मैं तो बस I was mesmerized, I was overwhelmed by everything that had happened over the past 2 years. और वो सब सोच के मैं बस नज़ारा देख रहा था. फिर मेरे शेरपा ने मुझे धीरे से ऐसे इशारा किया, सर आपका वो तिरंगे के साथ भी फोटो खींचना है, आपका समिट फोटो खींचना है, हमको एक 360 डिग्री वीडियो खींचना है. तब मैं जाके जग गया और फिर मैंने वो बैग से तिरंगा निकाल के वहाँ पे समिट पे फोटो लिया. लेकिन यस, द फर्स्ट थॉट ऑन माय माइंड वाज कि everything that we worked very hard for the past 2 years, it has now reached its end. Like, we were successful in doing what we had planned. Wonderful, wonderful. So congratulations to all three of you for submitting and returning back safe. And I'm sure there are a lot of questions that many of us have. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मे बी पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन करना पड़ेगा. लेकिन बिफोर वी कंक्लूड, क्योंकि ऑलरेडी इट इज 9:16, सो बिफोर वी कंक्लूड मुझे विवेक से पूछना है फ्रॉम द बिहाफ ऑफ एंटायर टीम, on the occasion of Gurupournima and your Everest summit, what will you tell or what will be your message to all our ANU students, all our students, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पूछ रहे हैं कि can we climb Everest? तो I'm sure they can. तो क्या मैसेज दोगे आप ये सब हमारे आह्वान निर्माण उड़ान स्टूडेंट्स को? एंड ऑल्सो how are we going to answer their questions? So many questions are there. Yes. So what plan do we have? Yes, I'm really, really delighted to have such a thunderous response to this session, and we would definitely love to interact with on such platforms more often.
But before I talk about how we will answer, let me first share about what I learned and what I felt after completing the Everest. First is yes, Everest is a dream mountain for every mountaineer, and that is why I aspired and finally could reach to the top. But when I did this, I realized that I got re-emphasized that climbing Everest or any mountain climbing is a team sport. Reaching to the top when we were climbing on our feet, it was not just that we or I individually made it to the top. It was the culmination of efforts of many, the Sherpas who supported my team, who was constantly with me, Umesh sir, who was guiding constantly from the base, the weather forecast team, who was fetching us weather forecast reports every now and then, my family, my friends, our Giripremi's well-wishers, who constantly supported in the whole journey. It is it is because of everybody's contribution that Giripremi has made this expedition successful. So this thing got re-emphasized that mountaineering is a team sport, and the importance of doing anything as a team, working collaboratively, was the greatest lesson this mountain expedition has taught me. Secondly, so does that mean everybody should climb Mount Everest? So then I would say those who would aspire to do mountaineering, they should definitely eye for. It is a thrill, it is an extreme mountaineering, but that doesn't mean everyone should climb physical mountains all the time. More than this physical mountains, there are mountains within us that we have to climb, and those are in every discipline that you are pursuing. Some of you might want to pursue career in sports, some of you in the academics, some of you in medicine, engineering, and so on. There are so many. Some may want to become artists, some may want to become a chef. So whatever you pursue in your life, what this expedition has taught me is that you give your 100%. Someday or the other, result will always come by. So that those will be the Everest of your dreams. And with this session, I would love to express my sincere wishes for everyone who have their dreams in their minds in any direction. Try to reach to the Everest of your dreams, and either today or tomorrow or day after tomorrow, you will definitely earn success, and that will be the most memorable one. So it is going to be a journey of ups and downs. Like me, Nikunj, in case he had a setback, but he will certainly bounce back. So it is always going to be a journey full of ups and downs. The whole thing is that you have to have that belief that you have to climb on, you have to keep going. Someday you will certainly achieve what you aspire for. So that is all I wanted to share with you. And yes, as I can see, there are so many questions. Um, if we have to continue this session, it will, as Bhushan mentioned, it will end up all the way till the Sunday. So, but that's not possible. So what we will do is we are jotting down all these questions that you have shared, and we will be discussing these questions during the treks and in subsequent sessions and through some social media platforms as well. So that way also we will remain connected with all of you. Yes. Thank you very much, Thank Vivek. you. Thank you very much, entire team. And I'm sure many of you want to interact, but because of the shortage of time, we may not have the one-to-one interaction. But since there are two hands raised, we will quickly have one question. Atharva. येस सो दादा तुम्ही नाही शेर्पा अख्खे म्हणजे 12 महिने असतात का म्हणजे कॅम्पवरती? नाही, मी मगाशी आन्सर केलंय. आय गेस ते वरती गेलं कुठेतरी. ते लिव्ह इन द विलेजेस बिलो 5000 मीटरच्या खालच्या विलेजेस मध्ये ते राहतात. अच्छा, फक्त म्हणजे जेव्हा येस येस क्लाइम्बिंग करण्यापुरते येतात. येस. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधा अकाउंट मधून कोण आहे? म्हणजे मी मीरा आहे. हा तर मला असा प्रश्न आहे की
वरती गेल्यावर म्हणजे तुम्ही कसं क्लाइंब करता, म्हणजे इतक्या वरतून कसं दोरी वगैरे टाकायची असते आणि Yes. मग घसरत नाही का बर्फामुळे? विवेक दादा देतोस आन्सर? Yes, such a wonderful question, Meera. So, to answer this, when we, I'll speak in Hindi English. Is that okay? So that Yes. everybody will understand. So when we climb from base camp, as I said, the technical mountaineering begins from the base camp to higher camp. There are certain Sherpas. They are called as ice fall doctors. So what they do Okay. is through the Khumbu ice fall, they fix the rope. So the first climber goes at the front. He checks the route. He assesses if there are any risks involved, and step by step he climbs further. He is attached with a rope, and that rope is called as managed by another climber. That climber is called as belayer. So that climber ensures that as the first climber is climbing, in case if he falls, that climber's fall is arrested by placing intermediate anchor points. Okay. So this Okay. way, these they are called as route opener Sherpas. So these route opener Sherpas, first in the icefall section, these icefall doctors fix the rope from base camp to up to camp 2. So that is their task to open the route, like fixing the rope from base camp to camp 2. Beyond camp 2, there is another team who fixes the rope from camp 2 all the way to the summit. So once the rope is fixed by placing intermediate anchors, rest of the climbers start climbing with the help of rope. Now there are technical equipment such as ascender. Ascender is to ascend. You must have heard a word called Jumar. So with the help Yes. of Jumar, you climb up, you ascend up on that fixed rope. Okay. And when you have to come down, you use equipment called as descender. So with the help of descender, you descend down. Now you might also wonder how to walk on hard ice, right? Yeah. So to walk on the hard ice, there are two more important equipment mountaineers use. One is the ice axe, which is in your hand. So it has sharp pointed areas where in case if you fall, you can arrest like this. You can also take the support while climbing with the help of hand uh, with ice axe in your hands. And to your feet, to your boots, there is a special equipment which is attached externally. They are called as crampons. It has spikes, metal spikes. So you attach these metal spikes to your boots and you can climb. So when you're climbing, you hit your feet with on the ice like 1 2 1 2 like this, and then you climb up. So that way you anchor your boots on hard ice. You use ice axe to anchor your hands, and that way you climb up. This is how everybody climbs on Yes, and mountain like Everest. those who are in Okay. आव्हान निर्माण उडान, ते मीरा तू सगळं हे शिकणार आहेस हळूहळू. आव्हान निर्माण मध्ये आपण आपल्या सगळ्या कोर्सेस मध्ये हे शिकतो. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर क्वेश्चन. अँड राजेंद्र मोहन तोरवीच्या अकाउंट वरून कोणाला विचारायचं आहे क्वेश्चन? सर मला एक प्रश्न आहे. हा. जर पाऊस पडत असेल हम्म. आणि तुम्ही समिटवर आहात तर तुम्ही ढगांच्या वर असता का? विवेक दादा? Yes, again, a very good question. When we are at the summit, it is that height where it doesn't rain. If it happens, it snows. But yes, if we see cloud, most of the time what happens, we see clouds way below. If the weather is clear at the summit, we can see clouds below, and there are chances that from those clouds in lower altitude, there could be rains happening. We may not be able to see that, but depending upon the color of the clouds, we can understand that, okay, in this region, there are black clouds. We can see it must be raining there. Did I answer your question? Yes. Yes. Thank you. Next question from Shivansh. Yes, sir. My question is that how Sherpas managed to create the camps? Okay.
Akhil Dada, are you there? Uh, yes, yes. So, Sherpa, see, campsites are fixed in general. The general location of all campsites is fixed on the mountain. So, when the Sherpas go up there to open the route till the summit, उस time पे they will take all the supplies with them. जैसे tent है या food है वो सब वो ऊपर जाके हर एक campsite पे वहाँ का सामान वहाँ पे रख के वापस आते हैं. तो जब टाइम आता है ऊपर जाने का द टेंट्स आर सेट अप एट दोज कैंप साइट्स और वहाँ पे पूरा जो भी कंपनी है उनके सबके खुद के टेंट्स होते हैं वो वहाँ पे सेटअप करते हैं वहीं पे जो फूड बनता है वो भी उन्हीं टेंट्स में बनता है तो बेसिकली ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो टेकन डाउन व्हेन वी कम बैक सो वापस आते टाइम पे पूरा का पूरा जो हम ऊपर लेके गए हैं सामान वो कैंप साइट से पैकअप करके वापस बेस कैंप पे लाना होता है तो बेसिकली यही है कि एवरी टाइम वी गो अप वी टेक सम इक्विपमेंट एंड टेंट्स एंड फूड एवरीथिंग विद अस एंड वी ड्रॉप इट ओवर देयर एंड कम बैक ऐसे ही शेरपा भी करते हैं. Yes, thank you, Akhil Dada. Yes, and I have one more question that approximately how many Sherpas are there to help us? सो हमारे साथ हर एक के साथ एक शेरपा था फ्रॉम कैंप 4 टू समिट एंड बैक टू कैंप 4 तो बेसिकली इट इज जनरली लाइक दिस कि हर एक इंसान के साथ एक शेरपा होता है थ्रू आउट द एक्सपीडिशन हमारे साथ कैंप बेस कैंप से लेके कैंप 4 तक जनरली साथ में दो शेरपा चलते थे 4 लोगों के साथ और दो शेरपा आगे जाके कैंप सेटअप करते थे तो दैट्स अबाउट द रेशियो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉसिबली दो शेरपा या तीन शेरपा भी लेते हैं लेकिन फिर उसके हिसाब से उनका कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है. Yes, thank you. Thank you, Akhil Dada. Next question from Renu. We will have only 3-4 questions now because already we are running out of time. Renu? Yeah, hi. So Yeah. I want to ask, what is the minimum age to go to the base camp of Mount Everest? Okay. So to go to the base camp of Everest, I think we recommend after completing 12 years, if the kid or the child is physically fit, so after 12 years you can take him or her to Everest base camp, but not younger to that. Okay, and how many days does it take from the really from the low altitude to go to the base camp? For the base camp, it takes the total trek is about 16 days from say Pune to Pune, and from Kathmandu to Kathmandu it is 14 days. 14 days. Okay. But this is about base camp. For Everest, the minimum age is, as Umesh sir already mentioned, 18 years old. So for Everest climbing, it is minimum 18, and for that the duration is 2.5 months. 2.5 months. Okay. Yes. Thank you. Yes, thank you. Vihan, can you go with your question? Yes, sir. So my question is, do the Sherpas come with us to the mountain? Yes, they do come up till the top, and they are like real companion, real lifeline of mountaineers. Sir, मी शिवांग बोलतोय. Shivang. my question was, what do you feel while crossing the crevices? Okay, what do you feel while crossing the crevasses? Vivek Dada. Crevasses is one of the most challenging and fearsome hazards, challenges on the route of Everest and most of the mountains. And to me personally, it was very challenging to cross these crevasses. In spite of there were ladders put on. So what happens is when you're crossing such crevasses, you naturally tend to look down between your feet, and it's completely dark. It is bottomless. Sometimes these crevices, the depth of these crevices can vary from 200 to 250 to even unknown level of depth they show. So it is the fear of falling and that keeps constantly going on your mind. So I tried at my best to focus on taking that next step only to the next run, and that way I managed to cross these crevasses. The longest one, which involved 5 ladders, was the most challenging part of my entire climbing. Um
So yes, it is very challenging. It is very fearing, scary thing for me to cross the crevasses. But focusing on one by one rungs at a time, I managed to cross. Yes. Next question. अश्विनी प्रसादे अकाउंट वरून कोण आहे? मी बोलू सर, माझा क्वेश्चन होता. हा शिवांक राहिला होता, तू बोल. तुम्हाला कळतं कसं की ते मध्ये आता क्रेव्हस येते, म्हणजे जे स्नोने कव्हर असतं, तर मला ते कळतं कसं की तिथे क्रेव्हस आहे? Okay. Now it depends on the experience. There are two type of crevasses. One is open crevasse किंवा hidden crevasse. Open असेल तर ती डोळ्यालाच दिसते आणि hidden जी असेल ती it is covered by snow. But जे एक्सपिरियन्स लोक असतात, शेर्पा असतात, माउंटेनियर्स असतात, एक्सपिरियन्स, त्यांना कळतं की इथे क्रिव्हॅस आहे, कारण का तिथे एक असं डिप्रेशन तयार झालेलं असतं आणि विथ दॅट डिप्रेशन ते कॅन मेक आउट की इथे क्रिव्हॅस असू शकते. आणि क्रिव्हॅस पण ठराविक फील्डवर, ठराविक स्लोप मध्ये तयार होतात, माउंटन्स मध्ये. ओके. प्रसादे अकाउंट मधून कोण आहे? क्वेश्चन प्लीज. समिट वर गेल्यावर किती मिनिटं राहू शकतो आपण वर? जे समिटला गेले होते त्यांना आपण विचारूयात. विवेक दादा किंवा अखिल दादा सांगा बरं. समिटवर असं काही फिक्स नाहीये किती वेळ राहू शकता. सर्वात महत्वाचं आहे ते म्हणजे आपल्याकडे असणारे रिसोर्सेस, एक म्हणजे टाइम आणि दुसरं म्हणजे ऑक्सिजन. सो हे आपल्याला जोपर्यंत आपल्या हातात आहे तोपर्यंत आपण सेफ आहोत. त्यामुळे या सगळ्याचं भान ठेवून आपण समिटवर टाइम स्पेंड करत असतो. जनरली समिटला पोहोचून तिथे फोटोज काढणे, थोडंसं एकमेकांना ग्रीट करणे आणि हे करून लवकरात लवकर खाली पोहोचणे हा थॉट असतो. पण इट मे व्हेरी. काही जण 5-10 मिनिट थांबतात, आम्ही अर्धा पाऊण तास थांबलो होतो, काही जण इव्हन थोडा जास्त वेळ पण थांबू शकतात. काही जणांनी काही शेर्पासनी रेकॉर्ड पण केलेले आहेत की करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, पण पूर्ण वेळ पूर्ण दिवसभर समिटवर राहण्याचा रेकॉर्ड केलेला आहे. पण हॅव्हिंग सेड दॅट, मी मगाशी म्हणत असतं, वेळ आणि आपल्याकडे असणारा दुसरा इम्पॉर्टंट रिसोर्स ऑक्सिजन, हे सांभाळून आपण समिटवर थांबणं अपेक्षित असतं आणि लवकरात लवकर खाली पोहोचणं. येस. हर्षदा. मला एक प्रश्न होता की तुम्ही वर जायला जो रूट वापरता तोच रूट परत खाली यायला वापरता का डिफरंट रूट्स असतात? अखिल. मला वाटतं अखिल दादा आणि विवेक दादा तुम्ही ऑनच राहा कॅमेऱ्यावर, म्हणजे कोणी क्वेश्चन विचारलं की लगेच आन्सर. मेनली असं आहे की रूट सेमच असतो, कारण की एकच रोप फिक्स केलेली असते बेस कॅम्प वरनं समिट पर्यंत. पण ह्यात रूट बदलतो फक्त खुंबू आईसफॉल मध्ये, कारण की खुंबू आईसफॉल हा मुव्हिंग आईसफॉल आहे आणि दिवसभरामध्ये जेव्हा ऊन वगैरे बाहेर येतं, सूर्य तापतो, तेव्हा तिथे मेल्टिंग होतं आणि बऱ्याचदा ज्या रस्त्याने आम्ही वर गेलेलो होतो त्या रस्त्याने आम्ही खाली नाही आलो, दुसरीचकडनं खाली यावं लागलं. पण खुंबू आईसफॉलच्या पुढे सगळा वरपर्यंत एकच रूट असतो, त्याच रूटवरनं आपण वर जातो आणि त्याच रूटवरनं खाली येतो. तसं एक जस्ट ऍड करतो, एव्हरेस्ट क्लाइंब करायला म्हणजे हा जो आहे हा ट्रेडिशनल रूट आहे नेपाळ साईडनं, ज्याला साऊथ कोल रूट म्हटलं जातं. पण असे एव्हरेस्टला क्लाइंब करायचे 20 रूट आहेत. काही रूट तिबेट साईडने आहेत, काही रूट नेपाळ साईडने आहेत. त्यातला नेपाळ साईडचा हा मोस्ट यूज रूट आहे, साऊथ कोल रूट ज्याला म्हटलं जातं. तो त्या रूटनं आम्ही क्लाइंब केला होता. ओके. ओके. नेक्स्ट प्लीज. आपण ऍक्च्युली इट इज व्हेरी नाईस टू सी दॅट किड्स आर हॅव्हिंग क्वेश्चन्स आणि म्हणूनच आम्ही पण कंटिन्यू करतो आहोत. सो पेरेंट्स पण कौतुक आहे की तुम्ही त्यांच्याबरोबर थांबलायत आणि मुलांना इंटरेस्ट आहे एवढं ऐकण्यामध्ये. सो डेफिनेटली विल गो विथ नेक्स्ट क्वेश्चन. हर्षदा कर्जतकर अकाउंट मधून कोणाला विचारायचं आहे? I just finished asking question. My son asked the question. Okay. Next is who? Kamlesh Jain. So you can lower your hand, ma'am. Or I will do. Okay. First, I would like to wish all the dadas happy Gurupournima. Thank you. Thank you. And my question is that when you were on the 4th camp or in the whole expedition, how did you protect yourself from the wind?
सो मेनली वी वर, जैसे विवेक दादा ने पहले बोला कि वी वर वेयरिंग अ लॉट ऑफ लेयर्स. सो पहले द स्किन पे जो लेयर लगता है वो वार्मर होता है, वार्म क्लोथ्स होते हैं, थर्मल्स बेसिकली. उसके ऊपर एक और लेयर जो बेसिक टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट है, उसके ऊपर डाउन सूट है. सो डाउन सूट के मतलब डाउन सूट का यूज दोनों के लिए किया जाता है, विंड के लिए भी उसका यूज हो जाता है और ठंड के लिए भी. सो देर वर विंड्स व्हेन वी रीच द समिट, जो साउथ समिट से लेके नॉर्थ समिट तक का पूरा जो रिज है जिसको समिट रिज बोलते हैं, वहां पे जब हम पहुंचे तब बहुत ज्यादा विंड्स थे, अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होंगे. तो 2-3 बार ऐसे भी हुआ कि वी वर पुश्ड ऑन टू द कॉर्नर्स विच वाज ऑन आवर राइट साइड. लेकिन वहां पे ये सब सहन करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि देर इज नो अदर ऑप्शन ओवर देयर. Okay, and how did you protect yourself from wind chill? Because wind chill. विंड चिल फैक्टर जो है वो बेसिकली वही है कि अगर -40 डिग्री टेम्परेचर है और विंड चिल, विंड ज्यादा आ रहे तो बिकॉज ऑफ दैट यू स्टार्ट फीलिंग कोल्डर. मे बी इट फील्स दैट इट इज -50 और -60 डिग्रीज. लेकिन यू जस्ट हैव टू डील विद दैट कोल्ड एंड मूव ऑन, बिकॉज एट दैट पॉइंट जो आपने लेयर्स पहने हुए उससे ज्यादा आपके पास और कुछ है नहीं. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीच द समिट एट एज फास्ट एज यू कैन. वहां पे जो टाइम स्पेंड करना है और जितना जल्दी हो सकता है उतना नीचे आना है. एंड इसी के साथ यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट दैट यू आर वेयरिंग इज ऑफ गुड क्वालिटी. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कहीं से फटा हुआ है या उसका अंदर का जो डाउन फेदर्स यूज किए हैं वो हाँ. ओरिजिनल नहीं है, कुछ सिंथेटिक यूज किया है. सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइल सिलेक्टिंग योर इक्विपमेंट एज वेल. तो ये सब पहले से ही प्लानिंग किया जाता है. Okay. One thing I will add, you have to keep yourself moving. जितना रुकोगे उतना विंड चिल में आपको ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने पड़ेंगे एज अ कोल्ड. एंड जितना आप मूवमेंट रखोगे उतना बॉडी वार्मथ मतलब क्रिएट करती जाएगी. Okay. Thank you. Yes, Shivansh Deshmukh. Yes, sir. I had one question. Will be the layers sufficient for us, or we need to carry more? No, for expedition like Everest, as Akhil Dada just mentioned, there are different types of layers, and if you use them appropriately, especially when you're on a summit push, if you have thermal layer, then a t-shirt, track pant, and top of that, the down suit, generally it is completely adequate. But it's not just the clothing that's enough. If you, along with that, you need to have appropriate hydration, nutrition, so as to keep your body warm internally as well. So it's only when you keep your body internally warm and proper clothing, only then you can maintain a fundamental rule of clothing to stay warm and dry. If you do that, you are safe. म्हणजे तिथे कधी सूर्यप्रकाश जास्त वेळा पडतच नाही का? पडतो ना सूर्यप्रकाश. म्हणजे साऊथ कोवल किंवा इव्हन समिटचा जो सेक्शन आहे, that when we were climbing it was very windy, so and at the same time it was clear sky. So when we reached back to camp 4, sun was up on our head. So you might feel like वरती सूर्य तळपतोय, but still it was -20 degrees Celsius, so we could not even remove our gloves out of our hands. So it was that cold as well. But at the same time, when situation at Camp 2 is like, it could get very hot at daytime. So it is a place, it is in a bowl-like shape, Camp 2 is located. So in such places, winds are relatively not, they don't exist in some situation. And if the sun is beating hard on you, then you get extremely warm, extremely hot. You don't even want to wear your regular t-shirts while just sitting. So it then becomes very challenging because you have to wear something, but at the same time it's getting very hot as well. And It's a difficult situation you have to manage. what will be the minimum costing of this whole trek? This is a mountaineering expedition, very extreme mountaineering expedition involving more than 50 days in extremely remote conditions, requiring
highly technical equipment, highly technical clothing systems, Sherpa support system, staying nearly for 50 days in mountains. So because of all these factors, the cost of climbing Mount Everest is extremely high. Along with that, climbing Mount Everest requires one to pay for the permit to the Nepal government. That fee in itself is 15,000 US dollars, which is equivalent to 15 lakhs, nearly equivalent to 15 lakhs. So, roughly in our expedition, it was around 35 to 40 lakhs per person. That much of cost we had to incur for Everest expedition. I think there are so many questions still pending. So can we all request you to please text the messages on the WhatsApp? जो Yes. क्वेश्चंस हैं आपके WhatsApp पे क्वेश्चन डाल सकते हो या इवन हमारे जो WhatsApp ग्रुप्स हैं उस पे भी डाल सकते हो. We will answer all the questions. We would love to interact with kids, but because of the time, all please understand that we will have to close this meeting because it is now 1.5 hours. So Meera and all the interested people, ज्यांना अजून question विचारायचे आहेत. So extremely sorry that we have to close it. तुम्ही सगळे क्वेश्चन तुमचे जे आहेत ते मेसेज मध्ये टाका आणि आम्ही सगळे क्वेश्चन आन्सर करू. So I am extremely sorry all others those who have raised their hands. आपण आता क्वेश्चन्स घेऊ नाही शकणार आहे कारण का it was really overwhelming response from all of you. And once again we wish a very happy Gurupournima to all of you. आणि आमच्या सगळ्यांसाठी for all of us mountains and the nature are the biggest guru. Mountains कडनं आम्ही खूप शिकत असतो. We all learn from mountains. So we wish all the kids their successful Ava Nirman Udan journey and looking forward to see them on the field and interact with them in person. Thank you very much all. Okay, so you can leave the meeting. We are closing in next 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye. Good night. Bye, bye everyone. Bye everyone. Good night. Bye. Good night.